आने वाली है 6 o'clock हो गया, उनका मैसेज आना लगा। यस यस। गुड मॉर्निंग दीप्ति, गुड मॉर्निंग। Very good morning. Good morning. Very good morning, everyone. Good morning. Good morning, Dee. Good morning. Good morning. Very good See the morning. colors, Good Dipti. morning. See the colors Good morning, that are Deepti ji. visible Good on the morning. screen. Good morning, everyone. John. नमस्ते आंटी। Good morning, Priya. Good morning. मुझे दिख ही नहीं रहे हैं सरिता जी। Good कहीं morning, नहीं दिखना ma'am. पड़ेगा। हाँ। Sky you can see na? Oh yeah. Okay. Yes, I can see the skyline and I can see the orange color happening. Yeah, Yes. it's beautiful. Yes. Good morning, ma'am. John. Good morning, Auntie. I can hear it. Good morning. Yeah, it's Yeah, really Jai's beautiful. voice. Yes, now we can see. Thank you, Priya or Good Poonam. morning, Done sir. it. Thank you so much. दीप्ति Good कोई morning, बच्ची का Deepti आवाज ji. आ रहा है। Thanks to Sarita ji for showing such a beautiful sky. Yeah. Yes, actually, it is. Wow, really morning, lovely. nice, Priya. beautiful, beautiful Lovely. skyline. Thank you for showing this. Thank you. Thank you. And then today is a day when once again we are picking up a dream list. We are once again picking up a dream list and we are doing what Rhonda One is asking us to do. So she says, now keep your dream list before your very eyes, which is also the name of the chapter today. Today's chapter's name is called Before Your Very Eyes. It doesn't start from magic. It's not magical health, magically transform your relationship, magic this, magic that, magical people who made a difference, magical to-do list. It's not talking about all that. It's talking about before your very eyes. कि हमेशा अपनी मन की आंखों के सामने अपनी ड्रीम लिस्ट को रखो so that we can live a life of our dreams. And this is what the chapter is about. So it is not about today's assignment. It's not just about today's assignment that before your very eyes, आज अपनी आंखों के सामने रखो. आंखों के सामने तो रोज ही रखना पड़ेगा ना, कल भी और परसों भी and day to day after tomorrow and forever. जब तक हमारी पूरी ड्रीम लिस्ट सारी कट नहीं जाए. All the 10 desires that we have in our list has to be done. And it is already done by the law of attraction. Parallel universe में वो already हो चुका है. It just has to come before your very eyes. So वही वाली attention ना, E is equal to MC square. तो हम जब observer effect के साथ देखेंगे, when we keep it before the very eyes, according to the observer effect and according to the formula that Albert Einstein had given, E is equal to MC square, that energy that we will be giving to our desire list, जो हमारी 10 desire list जो हमने बनाई थी in day number 13. So जितना observer effect हम उसमें डालेंगे, उतना ज़्यादा वो form, वो matter में convert हो जाएगा. So that energy, अभी तो वो energetic form में होगा because it is written on a paper, or maybe we've put it on our desktop, or we've put it in the document form on our mobile. बट अभी वो एनर्जी फॉर्म में है ना, बिकॉज हम अपनी मन की आंखों से उसको देख रहे हैं. अभी फॉर्म रियलिटी नहीं लिया. इट्स नॉट बिकम अ सब्सटेंस और अ मैटर राइट नाउ, बट द ओनली वे टू कन्वर्ट इट इनटू मैटर इज व्हेन वी गिव इट ऑब्जर्वर इफेक्ट. दैट इज व्हेन वी कीप इट बिफोर योर वेरी आईज. ऑब्जर्व तो तभी करेंगे ना जब आंखों के सामने होगी, क्योंकि 5 सेंसेस से ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है, तभी कोई चीज मैटर में कन्वर्ट होती है. सो दैट इज व्हाट टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल. And so I'll just, Poonam, you're reading today, right? Yes, ma'am. The first book, okay. So this is the chapter here. We'll just go through the illustration. So illustration में वही है, बचपन में जो हम जादू देखने के लिए जाते थे. अभी इतना ज्यादा होता नहीं है कहीं पे, हर जगह है ना. पहले बहुत ज्यादा होता था, जादूगर आता था, जादूगर सरकार आते थे. And then it would be like really fun to watch, all that magician doing the tricks. So this is what it is about. ये जो magician की hat है, and then he always did abracadabra, and suddenly something would happen. A bird would start flying, a bird or a rabbit would come out of the hat. So here also we see the same thing. We see a rabbit coming out of the magician's hat, and this is a magic wand, जादू की छड़ी जिससे abracadabra होता था. And that लिस्ट जो ड्रीम लिस्ट जो हमारी है वो बाहर रखी हुई है. सो ड्रीम लिस्ट से लाइक मैजिक क्रिएटेड, like magic, with the power of gratitude, with the magic of gratitude, create the dream list and translate it into the form, translate it into matter. That is what today's chapter is all about. और वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, तो हमेशा के लिए होता है. बिफोर योर वेरी आइज तो नहीं है ना, आज रख लिया कल नहीं है. अब बिफोर योर वेरी आइज तो रोज ड्रीम लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए.
So हम इसको पढ़ते हैं. Yes, Poonam, please start reading. Yeah, good morning, ma'am. Good morning, everyone. Day 22, before your very eyes. This world, after all our sciences, this world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. By Thomas Carlyle, he's a writer and a historian. No, I mean, like someone's just constantly giving me messages and they're flashing on my screen, so I'm not able to see the scroll button. Sorry. Yeah. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, and as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, thank you for it multiple times a day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list. And when I had a new desire, I would add them to my list. One of my desires from the original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the aeroplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians. And suddenly, laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the aeroplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt. And I had 2 months before I would force
I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I own. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to pay all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's life, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire lists that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy, because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. Magic practice number 22. Before your very eyes. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Third, read through each sentence and desire on your list. And for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Fourth, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you," for the best thing that happened during the day. Yeah, Thank thank you you so so much, much. Poonam, Thank for you. reading so beautifully. Thank you, thank you. So in this, it is so surreal Rhonda Byrne's story. This is what I was thinking, that पहले तो जब हमारी problems होती हैं तो हम solution oriented तो अभी भी कोशिश कर रहे होने की, but है नहीं.
है ना, कोशिश कर रहे हैं. Whenever there is an issue, we always get so absorbed into it, we get consumed by it, we keep thinking about it, we keep worrying about it. We become very low, down and out, absolutely. So first thing that we've learned is that जो हमने पिछले chapters में पढ़ा था, that always be solution oriented, don't be problem oriented. Magical to do list वाले chapter में हमने पढ़ा था that always be solution oriented, don't dwell into that problem हुई, okay, what can be done about it, how can you actually have it removed from the bottom, from the roots of it, what can be done, what is the next big move that you have to do, what you have to think, what you have to write, what are the practices I can do right now. अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में, क्या मैं कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, हाँ मैं पढ़ सकती हूँ डिजायर लिस्ट, हाँ मैं मैजिकल फुटस्टेप्स कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं 108 टाइम्स थैंक यू लिख सकती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिस ये वाला वर्ड ये मैं कर सकती हूँ, हाँ दिस आई कैन डू. Okay, and then I can just use that word change and think of something better, think of the solution. Yes, can we do that? जैसे अभी कुछ हुआ है इशू या कोई काम नहीं बन रहा है आपका, and एकदम से change करके that all my work is done before time and so easily and comfortably, I'm so happy about it, everything is always working out for me. So आपने change करके दूसरा वाला seed डाल दिया अपने अंदर. ओके, सो ये सारी प्रैक्टिसेस की. अब वो प्रॉब्लम में कोई एनर्जी रह ही नहीं गई ना, बिकॉज प्रॉब्लम की एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म हो गई, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. सो अपने आप बाय डिफॉल्ट अगर कोई इशू आया है, एंड देन नाउ वी बिकम सोल्यूशन ओरिएंटेड, सो सोल्यूशन विल स्टार्ट अपीयरिंग, बिकॉज एनर्जी कहाँ जा रही है, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और जहां पे एनर्जी जाती है, वेर एवर यू पुट एनर्जी, दैट एरिया एम्पलीफाइज इन लाइफ. कहीं पे भी whatever you love amplifies, whatever you like amplifies, whatever you think about amplifies. Okay, because thought उसमें गया वो amplify हो जाएगा. अब अगर आपका thought उसमें गया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, तो अब आपकी लाइफ में सारे ऐसे लोग आने लग जाएंगे जो आपको बहुत बैड फील कराएंगे, because they will not respect you, they'll speak anything, they'll speak things that you don't like. Why? Because you manifested it. You were dwelling in that thought of thinking that ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे कह दिया, मुझे बहुत बुरा लगा था इतने टाइम पहले, दिस इज नॉट अ गुड एटीट्यूड, आई विल नॉट टॉक टू दोज पीपल. सो दैट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. सारी एनर्जी हम उस तरफ फोकस कर रहे हैं, तो जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, वो कहाँ है, वो पॉजिटिव एनर्जी तो है ही नहीं बिल्कुल भी ऐसे में. तो पहली चीज तो हमको ये सीखनी है, बीइंग सोल्यूशन ओरिएंटेड. जो अभी रॉन्डा बॉय ने बताया कि इनकी लाइफ में इतनी मेजर प्रॉब्लम्स थी जब इन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी, और उस वक्त उन्होंने ये लिखा था that to bring joy to millions of people. इनको पता ही नहीं था कि आगे कैसे करना है. She was still associated with the Australian television जहाँ पे वो प्रोडक्शन में काम करती थी, तो तभी से उनको सीक्रेट का पता लगने लग गया था. इन देन इतना बड़ा मूव लेके अमेरिका आना, और मतलब जहाँ करेंसी अलग है, सब कुछ अलग होता है वहां पे, है ना. ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ लिविंग एंड अमेरिकन वे ऑफ लिविंग में बहुत स्टार्क डिफरेंस है. सो एक तो आप ओरिजिन नहीं हो, वहां पे कोई है नहीं आपका, बट वहां पे जाके उनको ये पता था कि मूवी तो मैं वहीं जाके बना सकती हूँ, बिकॉज तब उनको ये था कि सीक्रेट मूवी बनानी है ना. पहले कुछ लिखना लिखने का काम तो उन्होंने किया नहीं था. शी स्टार्टेड विद मेकिंग द मूवी, द सीक्रेट फिल्म. To make the secret film, she knew that America is the land of opportunities and growth, so let me just go there. So to go there, to find out the right people, of course इनकी sister और उन सब ने इनको काफी support किया था. Actually जब हम उसमें देखते हैं list of gratitude में, शुरू में तो उन्होंने, उनके बहुत सारे family members है, like उनकी sisters, उनके brother-in-laws, उनकी daughter, उनके son-in-law, they were all part of that secret movie making and all that. So but still, to be thinking so big and being solution oriented, उस वक्त जब आपका $2 million डेट है, और आपको ये बोला जाता है कि आपका घर, आपका प्रॉपर्टीज, आपका जो भी है वेल्थ, वो सब आपकी ले ली जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे बैक योर डेट. ठीक है, क्रेडिट कार्ड में उनका इतना ज्यादा वो होता जा रहा था, बिल्डअप होता जा रहा था, तो उनको धमकी मिल गई थी दैट शी इज गोइंग टू उनको सब कुछ, उनका सारा कॉन्फिस्केट हो जाएगा, सारी वेल्थ उनकी चली जाएगी इन अबाउट 2 months ऑफ टाइम. एंड उस वक्त वो सपने देख रही है दैट शी इज बिल्डिंग अ ह्यूज हाउस बाय द ओशन, शी इज बाइंग दैट पर्टिकुलर कार, सो वो उनको जो कार खरीदनी थी, इट वॉज एन SUV, जो उन्होंने दूसरी किताब में बताई है. She had desired that she wants to do something really big, जिसे millions of people को happiness जाए. उनका यही वाला ड्रीम था, बोरा बोरा जाने का, ताहिती. ये भी उनके ड्रीम लिस्ट में था.
तो उनकी जो पूरी ड्रीम लिस्ट थी, क्योंकि उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने लिखी हुई थी, तो उनका पूरा 4 साल लगा पूरी ड्रीम लिस्ट को कट ऑफ होने में, जो ओरिजिनल ड्रीम लिस्ट थी। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत क्लियरली हमको ये बताया हुआ है कि जैसे आपकी एक ड्रीम पूरी हो जाती है, कट इट ऑफ एंड ऐड अनदर वन. So the moment suppose dream number 5 has come true in your desire list of like 10, so वो number 5 desire पूरा हो गया, immediately add another one instead of it, है ना. सो ये उन्होंने वो बताया है. तो इस तरह से उनके जब ऑल 10 ऑफ देम कट गए थे, ऑफ कोर्स उनके न्यू डिजायर्स आ गए होंगे उनके लिस्ट में, बट जब वो सारे 10 कट गए थे, तो ये 10th वाला इनका ये था, टू गो टू बोरा बोरा. और उन्होंने इतनी एनर्जी इसमें इतने अच्छे से डाली थी कि वो ट्रिप उनकी इतनी सरियल हुई, और लाइक वो जाके बहुत हैप्पी लोग, मतलब शी वाज सराउंडेड बाय दैट हैप्पी एनवायरनमेंट. हैप्पी एनवायरनमेंट में सराउंड होना बहुत बड़ी चीज होती है, सब नहीं कर पाते हैं. इतने मतलब टू बी सराउंडेड बाय हैप्पी पीपल एंड वेरी हाई वाइब्रेशन पीपल कहाँ हो पाता है. हमको मंदिरों में जाना पड़ता है उसके लिए, है ना, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई एनर्जी होती है. टेम्पल्स में डेफिनेटली हाई एनर्जी होती है, बिकॉज वहाँ पे भगवान के प्रेज में भजन चल रहे होते हैं, या गुरुद्वारे में जाए तो लगातार गुरबानी अरदास चल रहा होता है. तो वो आवाज से प्यूरिफिकेशन होता रहता है. वो आवाज और वो प्रेजेस जो होते हैं मंत्रास की तरह होते हैं, रेपिटेडली चल रहे होते हैं, एंड दे आर देयर ऑल द टाइम, है ना. फिर उसके बाद आरती होती है या जो भी होता है मंदिरों में, तो उस वक्त भी पंडित जी चैंटिंग करके ऑफरिंग करते हैं, आरती होती है. So that is how, like that high vibration places, if we want to create, we need to be. We otherwise बहुत मतलब अगर आप नॉर्मल लोगों के साथ रहोगे तो बहुत मतलब नेगेटिव वाइब्स भी होते हैं, कई बार उनके दुख होते हैं, कई बार उनके कुछ बैकग्राउंड्स होते हैं ऐसे. तो इनके लिए ये एक्चुअली बहुत बड़ी चीज थी, दैट शी वाज सो सराउंडेड बाय हैप्पी पीपल. और वो जो बता रही थी कि मैं तहीती गई और वहां पे मैंने देखा कि छोटा सा प्लेन था मेनलैंड तक आने का, और वहां से तो फ्रांस के पास ये आइलैंड है, बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है बोरा बोरा. तो और बहुत थिनली पॉपुलेटेड, बहुत ज्यादा लोग वहां पे रहते नहीं है. तो ये बता रही हैं कि जो प्लेन था वो छोटा सा प्लेन था, और उसमें जितने लोग थे वो इतना ज्यादा हैप्पी थे. तो कहती मुझे बाद में पता लगा कि दे वर ग्रेटफुल टू बी टुगेदर, दे वर ग्रेटफुल टू बी ऑन द प्लेन. मतलब हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे. कहते हैं ना, थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, and a complaining person is complaining even in paradise. So thankful, but they were all thankful, so they were like that, and she was in their orbit, है ना. किसी भी हैप्पी पर्सन के ऑर्बिट में आप चले जाओ तो वैसे आपकी जिंदगी बदलने लग जाती है ना, जिसको हम लॉ ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं. तो लॉ ऑफ एसोसिएशन बहुत मायने रखती है. तो और उनको उस लॉ ने खींचा उनकी तरफ, बिकॉज रॉन बर्न की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी. तो शी वॉज विथ ऑल दीज पीपल हु वर सुपर हैप्पी. सो इस तरह उनका पूरा 10 का डिजायर लिस्ट पूरा की पूरा हो गया था. आई मीन लाइक जब इन्होंने, बट देन व्हाट शी सेड दैट आई वुड, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल माय ड्रीम्स वर, आई जस्ट वांट टू रीड दैट फॉर यू, बिकॉज समटाइम्स हमारा थोड़ा सा रिजाइंड एटीट्यूड हो जाता है. हमको लगता है कि इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा तो अभी मैंने सोचना ही नहीं, बस यही हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है. दिस इज व्हाट वी थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना. तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दैट I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. जब ये उन्होंने डिजायर लिस्ट अपनी बनाई थी, तो वो कह रही हैं कि कोई मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि मेरी जिंदगी में क्या कभी ऐसा हो सकता है. It was literally impossible for her. Nevertheless, I took my top 10 desires. उन्होंने अपने 10 desires लिए, and I carried them with me on a piece of paper every day. मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि हम सबको भी यही करना है, ठीक है. जब भी कोई ऑथर्स या मेंटर्स लिखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जब वो शेयर करते हैं तो हम उसमें से ये इम्बाइब कर सकते हैं कि मुझे अब से क्या करना है. तो उन्होंने ये लिखा है, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day, not sometimes, every day. ठीक है. अगर वो रोज नहीं ले जाती ना, तो वो एवरीडे नहीं लिखती, वो झूठ नहीं लिख सकती. ठीक है. तो उन्होंने लिखा है दैट आई कैरीड देम विद मी ऑन अ पीस ऑफ पेपर. और उनके जमाने में तब इतना लैपटॉप और आईपैड्स और ये सब नहीं होता था, आपको कागज पे ही लिख के ले जाना पड़ता था, है ना. डेस्कटॉप्स होते थे विच वर नॉट कैरिएबल, मतलब इतने लैपटॉप्स कल्चर ही नहीं था एट दैट. 2004 की बात है ये, प्रीटी मेनी इयर्स अगो. And she carried that on a piece of paper every day,
Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it. जब भी उनको मौका मिलता वो उस लिस्ट को निकालती और उसको पूरी की पूरी पढ़ती फर्स्ट से लेके लास्ट तक, और खूब सारा ग्रैटिट्यूड हर एक डिजायर के लिए जितना वो दे सकती थी वो देती थी, ये सोच के कि एज इफ वो डिजायर उनका ऑलरेडी हो गया है, उनका फुलफिल हो गया है. सो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है दैट I kept it with my number one desire that I wanted more than anything else. I kept it constantly in my mind. I kept it constantly. जो आपके top desires है, उनको हमेशा दिमाग में रखो and say the magic words thank you for it multiple times in a day and feel as if it had come true. So say the magic words thank you. ये हमको करना है आज से. This is what we need to do. This is kind of a very clear-cut direction for us. That how to fulfill desires का topic है आज. How to fulfill your desires really fast. है ना? So she would say the magic words thank you for it multiple times in a day. Multiple times. Not 3, not 4, not 5. She's not even written the number. Multiple times in a day and feel as if it had come true. है ना? और ये फील करती थी कि वो तो हो चुका है ऑलरेडी. सो थैंक यू बोलती थी कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वो डिजायर मेरी जिंदगी में फुलफिल करने के लिए. सो दैट वे. और उसके बाद शी रोट दैट one by one every desire on my list magically appeared. So it didn't appear, it magically appeared out of nowhere. है ना? Magically appeared मतलब जादू की तरह वो सब होने लग गया. This is what she's trying to tell us. So as I receive my desires, फिर वो क्रॉस कर देती थी और अपना न्यू desires, ताकि वो 10 नंबर मेंटेन रहे on the list. है ना? So the 10 desires was always there. So just cut off one and add another one. So that is what she was. So this is kind of a clear-cut direction for all of us. That is, this is the way of life, how to live and how to have a desire answered. और उस वक्त जब उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, जब उन पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ था, इतने डेट में थी, और उस वक्त उन्होंने ये सारी चीजें लिखी थी, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है दैट आप अपनी मुश्किलों में भी यू आर so particular about that I have to create my life and I will not give up. It is a very not giving up attitude, you know, this which is so beautiful. So उसके बाद ये बताती हैं कि मैंने ये स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर की है, ये आपको बताने के लिए दैट नो मैटर हाउ बिग योर डिजायर सीम टू बी, चाहे आपका डिजायर कितना भी बड़ा हो, आपको लग रहा है इट इज नॉट पॉसिबल, हाउ कैन आई बाय अ हाउस इन न्यूयॉर्क सिटी, है ना, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू बाय अ हाउस इवन इन इंडिया राइट नाउ, हाउ कैन आई बाय इट इन न्यूयॉर्क सिटी. ऐसा सोच सकते हैं हम, क्योंकि हमारी सोच एक्चुअली हमको लिमिट करती है ना, बिकॉज कुछ हमारे बिलीव्स एंड प्रोग्राम्स हमारे माइंड में होते हैं विच ऑलवेज लिमिट अस. बट बी लिमिटलेस एंड बी इन्फिनिट in terms of your desires, in terms of your thinking. It will all come true. It has that potential. You will not believe. मैं पूनम को कुछ बता रही थी परसों कि मैंने अपने बहुत विजन बोर्ड पे एक जगह का नाम लिख के रखा हुआ था. और वो उसके बाद मैं कहीं पे गई तो वो जगह का नाम और जगह की फोटो वहां पे मैंने लगाई हुई थी अपने विजन बोर्ड पे. ठीक है, काट के कहीं से किसी मैगजीन से कट किया था मैंने. बहुत ब्यूटीफुल स्काईलाइन, टॉल बिल्डिंग्स, चमकती हुई रोड और वो. और फिर मैं एक इंडिया के बाहर किसी और कंट्री गई तो वहां पे मैंने वैसी की वैसी सिमिलर इमेज देखी, लेकिन उस वाली जगह पे किसी और कंट्री का नाम लिखा हुआ था. सो बट फिर मैंने जब मैं वापस आई उस किसी दूसरी मतलब थर्ड कंट्री पे गई थी और वहां पे वैसी की वैसी ही बिल्डिंग्स, वैसी की वैसी रोड थी, तो मैंने उसको हटा लिया अपने विजन बोर्ड से कि ये तो पूरा पूरा हो गया मेरा. ठीक है, लेकिन उसके नीचे किसी और कंट्री का नाम लिखा हुआ था. तो अब बाय डिफॉल्ट मेरी उस कंट्री की बुकिंग्स हो गई हैं. मतलब इट इज सो मिस्टेक दैट आई वाज थिंकिंग दैट मैंने उसको 2 साल पहले हटा दिया था. वो था 2 साल तक मेरे विजन बोर्ड पे, वो नाम भी था और वो इमेज भी थी और उसी तरीके के स्ट्रक्चर्स थे, वो सब था. ठीक है, लेकिन जब मैं किसी दूसरी कंट्री में गई वहां पे मुझे ऐसी की ऐसी बिल्डिंग्स दिखी, ऐसी की ऐसी रोड दिखी, तो मैंने इसको विजन बोर्ड से हटा लिया आके. मैंने कहा मैं कुछ और डाल देती हूँ, बिकॉज विजन बोर्ड को अपडेट भी तो करना होता है ना आपको लगातार, because your desires are expanding, you are an evolving person all the time. तो मैंने उसको हटा लिया. अब उस कंट्री का, जबकि वो 2 साल हो गए मुझे हटाए हुए,
ठीक है, उस कंट्री का अभी माय रिजर्वेशंस आर डन, माय बुकिंग्स आर डन. सो दिस इज हाउ इट कम्स ट्रू. जो चीज आपने इमेज में एक बार होल्ड कर ली, चाहे वो नाम है, चाहे वो जगह है, चाहे वो वैसा की वैसा ही है, वो सब पूरा हो जाता है. It is so mystic. I'll tell you that there was another picture on my vision board जो मैंने लगाई हुई थी, जिसमें मैंने एक स्लीवलेस मरून कलर का शर्ट पहना हुआ था. एंड आई वाज, मेरे पीछे बीच था और मेरी पीठ समुद्र की तरफ थी, टुवर्ड्स द सी. ठीक है, आई वाज सिटिंग ऑन द सी बीच at a table having my drink. I think it must have been a margarita, or that's what I have at Sundowners. तो वो sundowner का टाइम था, है ना. और पीछे my back was towards the sea and I was wearing that sleeveless maroon shirt and a skirt, you know, in that. तो वो स्कर्ट तो उस फोटो में नहीं लिख रही थी, बट मुझे पता था कि मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली आप फोटोशॉप जब आप करते हो यू नो उस पे लगाने के लिए, तो आप अपने आप को ही तो लगा देते हो ना वहां पे. जैसे कोई टेबल होती है तो फोटोशॉप किया हुआ, तो वो फोटोशॉप वाली चीज थी. तो मैंने फोटोशॉप करके अपने आप को वहां बैठा दिया था. एंड एग्जैक्टली वैसे कोविड के टाइम में गोवा में हुआ. एंड इट डिड नॉट टेक इवन 3 to 4 months फॉर द डिजायर टू गेट फुलफिल्ड. आई डिड नॉट डिसाइड अबाउट व्हाट क्लोथ्स एम आई गोइंग टू वेयर. मैंने तो सोचा था कि मैं क्या कपड़े लेके जाऊंगी गोवा और क्या करूंगी, बट वही मैंने मरून शर्ट पहना हुआ था. फिर मैंने वो फोटो देखी एंड आई वाज लाइक वाओ. You know, this is how things happen, like so meticulous and micromanaged to that extent. So it is so amazing. फिर एक घर की पिक्चर, बिकॉज उस वक्त आई वांटेड सम वुडन फ्लोरिंग एंड ऑल दैट. तो मैंने एक रूम की घर की पिक्चर लगाई, जिसमें मैंने वो फ्लोरिंग्स और वो सारी चीजें, जिस तरह का मुझे अपना घर रेनोवेट कराना था, वैसा लगाया. अगेन डिड नॉट टेक इवन 3 to 4 months. 3 to 4 months, या हाँ, अक्टूबर में लगाया था, सॉरी अप्रैल में वो हो गया. अक्टूबर में लगाया था, अप्रैल में वो की वैसी फ्लोरिंग हो गई. सो दिस इज हाउ ड्रीम्स कम ट्रू. यू नो, कोई भी डिजायर आप अगर बहुत उसको अटेंशन, एनर्जी, लव, लाइकनेस, ये सब देते हो, फॉन्डनेस, इट कम्स ट्रू. और वो बहुत मिस्टेक तरीके से होता है. अभी भी जो ये वाली ट्रिप हमारी तो बहुत मिस्टेक तरीके से हो रही है. मतलब चेन ऑफ रिएक्शन जब हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूरा सीक्वेंस कैसे हुआ था. बहुत अमेजिंग. मतलब बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे कि कैसे का पट 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 पट, वन थिंग लेड टू द अदर, देन इट लेड टू द अदर, देन इट लेड टू द अदर, देन इट लेड टू द अदर, देन लेड टू, एंड इट वाज फ्रोजन. So this is how dreams come true. तो इसीलिए please keep giving your attention to, no matter how big you want to have like a 10 crore quarterly turnover company or a business, or you want to start some business, give it so much lightness and so much attention, so much fondness that अपने आप आपका वो desire पूरा हो जाएगा. Does not matter क्या आपके ग्रह बोल रहे हैं कि आपके इसमें business नहीं लिखा है, उसमें ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है. सारे प्लैनेट्स को दोष देना बहुत बुरी चीज होती है. प्लैनेट्स को दोष देना, प्लैनेट्स को एक्टिवेट करना, प्लैनेट्स को एक्टिवेट तो थैंक यू बोलने से ही हो जाएंगे, उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है. मन में कुछ और चल रहा है, थॉट, वर्ड्स एंड एक्शंस अलाइन नहीं है, और आपको सपोज किसी पंडित ने बोला यू डू दिस, आपका ये वाला शनि की वो चल रही है, वो ठीक है. शनि इतना ब्यूटीफुल प्लैनेट होता है ना. आप शनि को थैंक यू बोलना शुरू कर दो. थैंक यू शनि फॉर बीइंग देयर, फॉर बीइंग ऑलवेज देयर इन माय लाइफ, एंड फॉर सस्टेनिंग मी, फॉर गिविंग मी लाइफ एंड गिविंग मी अ परफेक्ट हेल्थ, एंड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. एनर्जी क्या जा रही है, मेडिटेशन से सारे चक्रास अलाइंड हो जाते हैं. आपको पता है सारे प्लैनेट्स, आप उनका जो भी मतलब वो था इन्फ्लुएंस, जो पता नहीं क्या पिछले जन्म के बिलीफ से आ रहा होगा, everything transforms with that. Okay, this is what my mentor always said, that don't worry, you meditate, आप अपनी सांसों को ठीक कर दो, अपने आप आपके नवग्रह बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाएंगे. they will start they will bow down to you, you know, मतलब they'll take a bow types. So this is how it works. Okay, so हम अभी तक समझे ही नहीं, हम बहुत पचड़ों में पड़े हुए थे, है ना. हमने पता नहीं कितने पंडितों के चक्कर लगाए होंगे at some point of time when things were not working out. Of course, अभी we are in a very good zone and we know that how to you know, align the planet and all that. We know everything because it is all about frequency, energy and vibration. It is all about that. मैं आपको multiple times ये कह चुकी हूँ because मुझे पता है that हम लोग हिंदुस्तानी and we have super belief in
like पंडितों के चक्कर लगाने में, we have super belief in that. And because we've always, ये belief भी हमारी, पता नहीं हमारे parents और उनके parents से आई है, उनके parents से आई है, तो ये सब चली जा रही है. But you don't have to worry at all. There is a quick fix to it, that is being in gratitude and love, because that is the energy of all the 9 planets, is only gratitude and love. And saying thank you to the sun and moon and 9 planets first thing when you're still in bed is very, very important. And when you do that, when you get up, then you're getting up from bed on a right foot. And right foot, I mean, like not literally right foot, मतलब आप उस energy के साथ जब आप उठ रहे हो, तो अपने आपके सारे planets और सारे chakras और सब में free flow of energy रहेगा, and you will start enjoying life to the fullest. Okay, so वो वाला ritual भी आप याद रखना जो मैंने आपको, I'll try and make another video of that and I'll share with Soumya and Anu today about that ritual, that the thoughts that you should still have when you're in bed, and then you get up, everything will fall into place. Don't worry. मेरी डेस्टिनी पहले ग्रैटिट्यूड जर्नी में आने के पहले की बिल्कुल सही जैसे लिखी थी मेरे जर्नी में वैसी थी, लेकिन जब से मैं ग्रैटिट्यूड की जर्नी में, वो सब उलट पलट गया है. कुछ भी वैसा नहीं हुआ है जैसे मेरे ग्रहों के हिसाब से लिखा हुआ है, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से लिखा हुआ है, कुछ भी वैसे नहीं हुआ जब से मैं ग्रैटिट्यूड और लव की जर्नी में हूँ. बिकॉज we are in the level of the power of the 9 planets and saying thank you to the sun and moon multiple times. Ab that sun ko to I don't know, so many times I say thank you and I love you, for giving me life, for giving me joy, for giving me money, for giving me health, for giving me family, for giving me friends, for giving me love, for giving me, such an amazing career, which is like a vacation, like literally when I go to office, it's like a vacation. Who can say that every day it is so exciting to go to work and kind of just be in that aura of growth. So this is how it is. Always, giving, always inspirations and ideas are coming. Every day inspiration and ideas coming. Oh, this I can do this, I can write it like this, I can do this. So it is so much of a joy, such a blissful life. It is not that सारे ग्रह मेरे फेवर में, ग्रह मेरे फेवर में हो गए हैं, हमने किए है ना अपनी मेहनत से. तो इसीलिए ये एंगल में अपना, बिकॉज ये रौनक पर ने ये सब नहीं लिखा हुआ है, बट हम लोगों के साथ ये थोड़ा सा होता है कि ये करो तो सब ठीक हो जाएगा. नहीं, आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस अलाइंड होने चाहिए. ये करो, अपने आप ग्रह विल स्टार्ट सपोर्टिंग अस. थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस में डिस्कनेक्ट नहीं है. थॉट ये होना चाहिए दैट आई वांट टू बी लाइक अ बिलियनर. तो वर्ड्स में ये है दैट आई वांट टू बी अ बिलियनर. थॉट्स में है कि मैं यहाँ से भी पैसे बचा लूं, मुझे वहां से भी डिस्काउंट मिल जाए, मुझे यहाँ से भी पैसे उनको ना देने पड़े. ठीक है, थॉट्स वैसे चल रहे हैं. शब्द है कि आई एम अ बिलियनर, आई एम अ बिलियनर, आई एम अ बिलियनर, आई एम अ बिलियनर. उधर मतलब 500 रुपए निकलने में दिक्कत आती है, तो कैसे होगा एक्शन में? इट्स अगेन प्रॉब्लम. तो ये तीनों जब अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, तो अपने आप ऑब्वियसली don't blame the stars for it. Blame yourself. Work on yourself. Don't work on stars and trying to fix it and doing this and that और उनके चक्कर लगाना, इनका चक्कर लगाना, वहां पे ये लिख लो, ये कर लो. आप वैसे भी गाय को रोटी खिला लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए थोड़ी है कि वहां बिजनेस डीलिंग चल रही है, गाय को रोटी खिला रही हूँ, फिर मुझे ये मिलेगा, इतना पैसा आएगा मेरे पास, मेरा बिजनेस, पंडित जी ने बोला है बिजनेस मेरा चल जाएगा अगर मैं कुत्ते को रोटी खिलाऊंगी, मैं गाय को रोटी खिलाऊंगी. दिस इज हु वी आर, मतलब एज स्टूपिड एज वी कैन गेट. मुझे इतनी हंसी आती है ना उन लोगों को देख के. तो वर्क ऑन योर सेल्फ. यू डोंट हैव टू. वैसे भी जाओ, मतलब गाय को रोटी जरूर खिलाओ, अच्छे से घी लगा के गरम गरम बना के. ठीक है, आपको डॉग को रोटी खिलानी जरूर खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है. आप पूरा पेडिग्री का एक पैकेट लेके आप खिला सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, आपको ब्लैक को खिलाना है, आपको व्हाइट को खिलाना है, डॉग को या गाय को ब्लैक को, दैट्स नॉट, आई मीन डोंट डू बिजनेस विद ऑल दीज थिंग्स. है ना, भगवान से भी बिजनेस जाके भगवान जी मेरी ये पूरी कर दो, मैं वापस आप क्या इतना चढ़ाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, वहां पे भी बिजनेस करते रहो. हर जगह बिजनेस ही बना रखा है हमने. ऑल दिस मन्नत बिजनेस इज अ बिजनेस ओनली. जो मन्नत मांगने जाते हैं ना, ये बिजनेस होता है कि आप मुझे ये कर दो फिर मैं ये कर दूंगी. अरे अपने आप पे वर्क करो, अपने आप अलाइनमेंट में सारे 9 ग्रह वांट टू गिव यू मच मोर. ओके, सो ये डिजायर लिस्ट के साथ प्लीज अपना मेंटल एटीट्यूड भी थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस को अलाइनमेंट में डालना होता है. जो थॉट में है बिलियनर, देन बिहेव लाइक अ बिलियनर. लॉ ऑफ अजम्पशन पढ़ी है ना हमने नेविल गॉडार्ड की.
बहुत बार हमने मल्टीपल टाइम्स उनका जिक्र भी किया है यहाँ पे, नहीं तो प्लीज नेविल गॉडार्ड की लॉ ऑफ अजम्पशन आप डालना, नेविल गॉडार्ड, अपने आप समझ आ जाएगा। नेविल इज NEVILLE, गॉडार्ड इज GODDARD। ठीक है, यूट्यूब पे डाल के उनके कुछ वीडियोस सुनो उसमें, देन बी अ बिलियनर। यू वांट टू बिकम अ बिलियनर ना, आप उसी तरीके से रहो, सिर तान के चलो हर जगह और खुल के आराम से जियो, जैसे जैसे एक बिलियनर जीते हैं वैसे ही सोचो, वैसे ही करो, है ना। क्यों जो धीरूभाई अंबानी थे, जब 500 रुपए कमाते थे, तो मैं बताया था ना उनकी कहानी कि वो जाके 300 रुपए की चाय पीते थे ताज बैंड स्टैंड पे, जो ताज होटल जो बैंड स्टैंड पे, शाहरुख खान के घर के साथ में वाला। तो वहां जाके वो 300 रुपए की चाय पीते थे, वो सिर्फ इसलिए पीते थे बिकॉज ही वांटेड टू लर्न दैट हाउ डू दीज पीपल बिहेव एंड हाउ डज इट फील लाइक। वो लॉ ऑफ असम्पशन करते थे। सो ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो ऐसे ही थोड़ी बने। आप रतन टाटा जी की जो स्ट्रगलिंग के टाइम की उनकी कहानियां आप पढ़ो एंड लर्न फ्रॉम देम। धीरूभाई अंबानी जी, उनकी कहानियां आप पढ़ो। I was awestruck when I came to know that he would actually go to Bandstand Taj Hotel to have 300 रुपए की चाय, जब उनमें 500 रुपए कमाते थे वो, तब वो 300 रुपए की चाय पीने जाते थे, ओनली फॉर दिस पर्पस दैट ही वांटेड टू बी अ बिलियनर। So he started doing all the things that a billionaire would do. He would notice things, he would go and sit and feel that place, so that subconscious mind में, मतलब वो भी तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर ही रहे थे ना, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में ये हैबिट पड़ जाती है आपको अब वो सब करने की, एंड देन आप डिग्रेड नहीं हो पाते हो, अपने आप को डिग्रेड नहीं कर पाते। सो गिव योरसेल्फ दैट हैबिट ऑफ अबंडेंस, ब्यूटी एंड लग्जरीज, and it will start happening to you. You will become like that. Be yourself in thought process that I am capable, I'm confident of doing anything. Stand in front of the mirror and give a speech. Give yourself a topic and give a speech. And then you see you such an excellent communication skill you'll start having. And this is how it is. ओके सो हर चीज पे अपने आप पे वर्क करना पड़ता है, प्लैनेट्स पे नहीं वर्क करना होता। इधर 5 उंगलियों में, इधर 5 उंगलियों में, अगर ये करके हम अपनी एनर्जी ठीक कर रहे हैं। एनर्जी आप खुद ही ठीक कर सकते हो, कोई चीज बाहर की एनर्जी आपकी ठीक नहीं कर सकती है। आप ये मार्क कर लो, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि आप ये चीज, किसी ने बोला है ये काम करना शुरू कर दो, वो काम करना शुरू कर दो, हरी मूंग को ये करो वो करो, आप वैसे ही कर लो यार। हरी मूंग हम आपको किसी को खिलानी है पिलानी है, खिलाते पिलाते रहो लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अलग से एक डब्बा घर में 2 रोटी अलग बना के ले जाया करो व्हेन यू आर गोइंग समवेयर, और सम अदर राइस, एंड यू कैन गिव इट एट ट्रैफिक सिग्नल। इन इंडिया देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग फॉर फूड, गिव इट टू देम, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। So this is how we need to, like when we do retreats and constantly doing retreats, I was telling one of my friends that जितना तुम retreats में जा जाके पैसे देती हो ना, एक बार किसी ऑर्फनेज में जाके तुम ये वाला पैसा दे देना जितना तुम रिट्रीट में देती हो। एक बार ऑर्फनेज में जाके पैसा देना, फिर देखना। क्योंकि अभी भी मैंने कहा वो 50 रिट्रीट करके भी तो बिजनेस अभी वहीं की वहीं है मतलब कोई खास तो मुझे तो नहीं नजर आया बिजनेस में ग्रोथ। तो मैंने कहा कि अगर आपको बिजनेस करना है, मैंने कहा नेक्स्ट रिट्रीट में आप नहीं जाएंगी, आप जाके एक ऑर्फनेज में पैसा दीजिए, और फिर इसके बाद देखना आपका बिजनेस, इट विल नॉट टेक इवन 1 month फॉर दैट बिजनेस टू कम अप। मैंने कहा यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर समवन एल्स। हमको डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बहुत अच्छे से सिखाया है डे बिफोर येस्टरडे वाले चैप्टर में, वही कंक्लूजन वाला ही चैप्टर हम कर रहे थे, जिसमें दैट जब आप मेडिटेशन के बाद उठते हो तो सोचो हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ यूजफुल टू द वर्ल्ड, हाउ कैन आई रीच आउट टू पीपल जिनको खुशी की जरूरत है, व्हाट कैन आई डू मोर, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू माई ऑफिस मोर, व्हाट कैन आई डू अबाउट दीज पीपल, how can I be useful, how make myself useful। उन्होंने ये कहा था ना, ये सारी चीजें सिखाई थी कि मेडिटेशन के बाद उठो तो ऐसे पूछा करो। तो अपने आप जब आप किसी के लिए अपने आप को इतना यूजफुल बना रहे हो तो आपकी हेल्थ तो अच्छी हो ही जाएगी ना, isn't it? बिकॉज आपका मिशन बहुत बड़ा है, 1000 मीटर की रेस में 100 मीटर की रेस इंक्लूडेड होती है। तो जब आप बहुत यूजफुल बनोगे किसी को, तो अपने आप वो 100 मीटर की जो है आपके आपके कप में है, तभी तो आप लोगों को पिला पा रहे हो। आपका कप फुल है तभी तो आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हो ना। तो अपना कप तो फुल होगा ही अगर आप देने की बात करते हो तो। सो दिस इज हाउ हमारा थॉट प्रोसेस को थोड़ा इवॉल्व होने की जरूरत है, तब हमारी ड्रीम लिस्ट बहुत फटाफट हो जाएगी। आई डिड नॉट टेक इवन a year to have all my 10 desires answered। नहीं, एग्जैक्टली आई टेल यू, मेरा लास्ट डिजायर जो मेरी फर्स्ट लिस्ट जो मैंने बनाई थी 2020 मई में,
2020 में फर्स्ट वीक में मैंने अपनी फर्स्ट लिस्ट बनाई थी, ड्रीम लिस्ट। वो फुलफिल हुई नेक्स्ट अगस्त में। हाँ, तो 1 साल 1 महीना, 1 साल 3 महीने लगे। 1 साल 3 महीने में मेरी टॉप 10 डिजायर लिस्ट फुल हो गई थी। ऑल ऑफ देम वर डन एंड दे वर रियली इम्पॉसिबल, बिलीव यू मी। They were things I could not have thought of had I not been in these sessions. I couldn't have thought of that मेरे लाइफ में ये सब आ सकता है, वो आ सकता है, वो सब आ गया। And it was that easy, but I did exactly what Rhonda is saying. I carried that. तब भी मेरे डेस्कटॉप पे ही थी, लैपटॉप में ही होती है मेरी ड्रीम लिस्ट, तब भी इसी में थी। तब भी I would read it every day and do all the practices and very diligently do the magic book and everything got fulfilled. Some of them were really impossible. मैंने बताया ना, कोविड में मुझे गोवा जाना था यार। I'm like पीक कोविड चल रहा है, सब कुछ बंद पड़ा है, फ्लाइट्स नहीं चल रही है, ये नहीं चल रही है। तो अब एक फ्लाइट चालू हुई इंडिगो की गोवा के लिए, उसमें कोई नहीं होता था, ऑल्टरनेट लोग बैठते थे, सीट भी आगे आगे इस तरह करके, और नॉन टच था, पूरा एयरपोर्ट खाली, नॉन टच वाला सीन चल रहा था, पूरा एयरपोर्ट खाली, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। वहां जाके जो करना था, वो जिस रेस्टोरेंट में खाना था, वही एक रेस्टोरेंट उसी दिन खुला जिस दिन मैंने लैंड किया वहां पे, वो आपको स्टोरी मैंने सुनाई हुई है, फुल कोविड में। These are the kind, this is how, you know, your dream list can actually come true. This is just an example. So let's just do that. यही हमारा आज का प्रैक्टिस है, that हमको सुबह सुबह अभी 12 बजे के पहले अपनी डिजायर लिस्ट निकालनी है, जो हमने 10 की बनाई हुई है। एक एक पढ़ के मिनिमम 1 मिनट के लिए विजुलाइज करके हमको उसके हो जाने के लिए थैंक यू बोलना है, एज इफ ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारा थैंक यू। और दिन में 2 बार और उस लिस्ट को आज निकालना है और उसको पढ़ के थैंक यू बोलना है। बस ये आज की प्रैक्टिस है। और आज के बाद से इस डिजायर लिस्ट को हमेशा अपनी आंखों बिफोर योर वेरी आईज रखना है और उसको खूब सारा थैंक यू as much as we can multiple times during the day. ये लिखा हुआ है रोंडा बर्न ने, that I used to give thank you multiple times during the day, right? So इस तरह करके हमको ये हमारी ongoing practice है। रोज 3 बार नहीं करना है आगे से, आज तो हमको ऐसे ही करना है तरीके से, जैसे 12 बजे के पहले डिजायर लिस्ट निकाल के एक एक पढ़ के हमको विजुलाइज करना है 1 मिनट के लिए कि वो डिजायर लिस्ट पूरा हो गया है, और थैंक यू एक एक के बाद बोलना है, और दिन में 2 बार और डिजायर लिस्ट निकालनी है और उसको डिजायर लिस्ट पढ़ के थैंक यू बोलना है फॉर गिविंग इट टू यू, बिकॉज एज इफ इट्स ऑलरेडी आवर्स। ठीक है, और एक और होमवर्क मैं आज दे रही हूँ आपको, नेविल गॉडार्ड का लॉ ऑफ अजम्पशन आप देखना, है ना। So assume that you are being that, you are this thing. And Bharti, I think, has posted something. I'm sure it must be something very relevant to it, to whatever we have studied. Okay. So वो भी देख लेना जो भारती ने अभी पोस्ट किया है। एंड देन ऑनगोइंग हमको ये डिजायर लिस्ट अपने साथ रखनी है, और रोज जब मौका मिले पढ़ो और खूब सारा थैंक यू बोलो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के थैंक यू भी बोलना है एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। सो ये इस तरह से इट विल कम बैक टू अस इन आवर लाइफ वेरी सून। इसके अलावा काउंट माई ब्लेसिंग्स सुबह और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस। काउंट माई ब्लेसिंग्स इज सारी ब्लेसिंग्स काउंट करो छोटी छोटी। थैंक यू टू द डोर बिकॉज आई कैन क्लोज इट एंड कीप माई हाउस सिक्योर। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई kitchen burners in the gas burners because they light the flame and I can cook my food, like all those छोटी छोटी चीजों को देखो, ये सारी नियामतें होती हैं जिनको हम काउंट भी नहीं करते मोस्टली। So that is what it is about. So और रात को सोने के पहले in a very good zone थैंक यू बोलना अपने दिन के लिए, कितना अच्छा रहा, फिर से बहुत अच्छे से गुड हेल्थ में आप सो रहे हो, और इस तरह से एक एक चीजों को काउंट करो रात को, उनके लिए थैंक यू बोलो, फिर अच्छा से कोई सीट डाल के सो जाओ। So this is what is about today. So before your very eyes is keep your dream list before your very eyes, and as and when you can, please say thank you for it. Okay. So now we go to breaking the habit of being yourself. So we are doing the concluding part, जो afterward होता है, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बेसिकली जो समराइज करके हमको एक जिस दे रहे हैं कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू गोइंग फॉरवर्ड। एंड वी हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट द नेक्स्ट बुक दैट वी आर डूइंग। आई शेयर इट विद प्रिया, एंड जैसे खत्म हो जाएगी हम उसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देंगे, और आपकी लाइफ उसकी वजह से बहुत चेंज होगी फॉर श्योर। थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो जाएगा, वो थॉट प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन की किताब है। हाँ जी, मीतू इज रीडिंग फॉर अस। Yeah. Good morning. Good morning. So we have to read from there is an aspect. There is an aspect of the self that is benevolent being
who waits behind all of those veils. This is who we are when we are not feeling threatened, fearing loss, trying to please everyone, racing to succeed, and scrambling to get to the top at any cost, regretting the past, or feeling inferior, hopeless, desperate, or greedy, just to name a few. When we overcome and remove whatever stands in the way of our infinite power and self, we are demonstrating a noble deed not only for ourselves but for all of humanity. So, the greatest habit you will ever break is the habit of being yourself, and the greatest habit you will ever create is the habit of expressing the divine through you. That is when you inhabit your true nature and identity. It is to inhabit self. इट इज टू इनहैबिट सेल्फ। तो अभी हमने अपने आप को तो इनहैबिट किया नहीं है, हम अपने एनवायरनमेंट में सारी चीजें फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ नेगेटिव ट्रेड्स दिए हैं ऑफ हु वी शुड नॉट बी। ठीक है, सो यहाँ पे आई जस्ट टेक यू थ्रू दिस। सो यहाँ पे वो बहुत क्लियरली बताते हैं दैट all of us, this is who we are when we are not feeling threatened, fearing loss, trying to please everyone, fearing loss. We do feel that कि आज पैसे बचा लो, कल आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं ज्यादा निकल गया तो वो जितना आप होल्ड करके रखोगे ना, मनी इज लाइक अ क्विक सैंड। यू नो व्हाट क्विक सैंड इज ना, हाथ में पकड़ो तो वो फिंगर्स के बीच में से निकल जाती है, और आप जितना टाइट पकड़ोगे ना उतनी ज्यादा वो क्विक सैंड ज्यादा ज्यादा जोर से बाहर निकलती है। तो मनी इज अ क्विक सैंड फॉर अस। ओके, वो क्विक सैंड ही होता है। तो किसी भी चीज का अगर आप लॉस, रिलेशनशिप का लॉस से आप इनसिक्योर हो रहे हो, दैट ओ आई विल लूज द रिलेशनशिप, उसके लॉस से इनसिक्योरिटी आ सकती है। सो वो लॉस, वो फीलिंग के कारण वो चीज आपकी जिंदगी से चली जाएगी, बिकॉज थॉट्स बिकम रियलिटी एंड थॉट्स आर ऑलवेज कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म, टेकिंग द फॉर्म, है ना, एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू फॉर्म। ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन बिना झूठी तारीफ किसी की करना, है ना, या कोई भी, मतलब जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस व्हेन एक्चुअली यू आर थिंकिंग वेरी नेगेटिव इन द हेड। Like you don't want to do something, you don't like someone, but you're just trying to be very goody, faking it. Basically, it means you're faking your personality. Racing to succeed. Okay, racing to succeed and scrambling to get to the top at any cost. Racing to succeed and scrambling मतलब जैसे तैसे मैं ऊपर आ जाऊं बस किसी तरह। ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि एफर्टिंग की तो दुनिया ही नहीं है। Then regretting the past. Okay, never regret the past. Past was always there to give you a beautiful future. अपना belief बना लो that anything negative that has happened in the past is to only give you a beautiful future. Okay, so with this kind of a mindset, when you go at it, you will not regret anything. So never have any regrets in life or feeling inferior that मैं सबसे कम हूँ, hopeless, desperate, greedy, just to name a few. ओके अगर हमको बहुत ज्यादा किसी से चीजें लेने की आदत पड़ जाती है ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता है दैट दिस पर्सन इज नॉट केपेबल एंड इज ऑलवेज डिपेंडेंट फॉर थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास खुद चीजें आनी बंद हो जाएंगी, बिकॉज सबकॉन्शियस को तो ये पता नहीं होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। वो जो डोमिनेंट थॉट्स आपके होते हैं कि मुझे यहाँ से भी ये मिल जाए, मुझे वहां से भी ये मिल जाए, मुझे वहां से भी ये मिल जाए, मुझे वहां से भी मिल जाए। ठीक है, तो ये वाले जो थॉट्स होते हैं, दैट यू स्टार्ट प्रेइंग दैट अदर्स गेट इट। ओके, सो दैट वे यू विल स्टार्ट, लाइक आपके सबकॉन्शियस को मैसेज बोलता है कि दिस माइंडसेट इज अबंडेंट माइंडसेट। When we develop an abundant mindset, then we start getting abundance. When we have the greed mindset that मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, that is not a good mindset to have. By the law of attraction and by the power of the subconscious mind, that information becomes very lethal to us and very deteriorating in the passage. Okay, तो अपने mindset को abundant mindset बनाना हमको बहुत जरूरी होता है। So that is what it is. So when we overcome, तो जब हम इन चीजों से overcome कर लेते हैं and remove whatever stands in the way of our infinite power and self, तो हमारी तो infinite power and self है, हम कुछ भी create कर सकते हैं। Let's create it. Don't decide. अगर मैंने ये कहा है कि let's see. Why let's see? That means you don't know your power. अगर हम let's see, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं तो वो करूंगी ना बहुत अच्छे से।
You know, like so I'm traveling this week for work, for office. So there's a particular place where I wanted to go in the city I'm traveling to. And then, so one of my friends who stays there, she told me that, I'm like, she's the faculty there. She told me that we'll, like this time we'll definitely go there. आपको पिछली बार भी जाना था, हम जा नहीं पाए थे. तो इस बार हम वहां जरूर चलेंगे. मैंने एक भी बार मैंने सोचा हाँ लेट्स सी हाउ इट गो देन आई सेड नो आई सेड यस वी विल गो we'll definitely go because we'll have a great quality time in the evening once I get free then we can go then it'll be beautiful आजकल दिन भी जल्दी हो जाता है तो लाइट के टाइम बहुत सुंदर लगेगा वो and all that okay so it is like वो let's see I hope so okay we'll try and work it out I will try that is not good manifestative powers okay where you've already decided तो जो आपने outcome decide किया ना I will try let's see how it goes अब नहीं होगा वो अब नहीं होगा वो ठीक है वो आपको पहले ही सेट करना पड़ता है हैव अ मैजिकल डे करके तो हम पूरा दिन सेट कर देते हैं हम तो नहीं बोलते कि लेट्स सी हाउ इट गोज है ना हम बहुत अच्छे से सेट करते हैं दैट ऐसे करना है कल मैग्निफिसेंट आउटकम जो हमने किया था तो मैंने 3 चीजों के लिए किया वो तीनों चीजें इतनी ब्यूटिफुली दे काइंड ऑफ came around that I can't even tell you. It was so amazing. मतलब एग्जैक्टली और वो सारी ऐसी चीजें थी जो जिसमें डायलेमा हो सकता था मुझे बट ऑल द 3 मैग्निफिसेंट आउटकम दैट आई रोट इन द मॉर्निंग केम अराउंड वे बेटर देन हाउ आई हैड इमेजिन्ड ठीक है सो नो योर इन्फिनिट पावर इन सेल्फ वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अ नोबल डीड एंड नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स बट फॉर ऑल ह्यूमैनिटी है ना क्योंकि ये हमने सीख लिया है बी यूज फॉर अदर्स यू कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन so now the greatest habit you can have is breaking the habit of being yourself. This is the greatest habit you can have. Okay? And expressing the divine through you. That you are the channel. जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने आप को ना divine का, universe का, ब्रह्मांड का channel की तरह treat करो. मेरे through life, other lives are also being touched. I'm touching the life of others. So that I always say, be like an electric eel. Electric eel होती है, वो किसी को भी छूती है, उसके अंदर electricity pass कर देती है. तो अपने आप को इलेक्ट्रिक ईल बना के रखो और आपके अंदर कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी डिवाइन पावर से आएगी बाय बीइंग इन ग्रैटिट्यूड बाय बीइंग इन लव बाय बीइंग इन द हायर सेल्फ एक्सप्रेशन बाय बीइंग इन अ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी एंड बाय मेडिटेटिंग इज जस्ट थॉटलेसनेस होते ही आपका सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने लग जाता है सो दैट इज हाउ इट इज है ना And this is what it says that this is to inhabit self. तो अब आपने अपने आप को कैप्चर करके रख लिया है मतलब माइंड आपके कंट्रोल में that is what it is and okay let's read it body part induction Meetu Body part induction, week 1. Now can you become aware of the space that your lips occupy in space? And can you sense the volume of space that your lips are in space? And now, can you sense the space that your jaw occupies in space? Can you notice the volume of space that your entire jaw is in space? And now, can you feel the space that your cheeks occupy in space and the density of space that your cheeks take up in space? And now, you can now notice the space that your nose occupies in space. Can you sense the volume of space that your entire nose is in space? And now, can you sense the space that your eyes occupy in space? And can you feel the volume of space that your eyes are in space? And now, can you pay attention to the space that your entire forehead occupies in space, all the way to your temples? Can you sense the volume of space that your entire forehead is in space? And now, can you notice the space that your entire face occupies in space? Can you sense the density of space that your entire face is in space? And now, can you notice the space that your ears occupy in space? Can you sense the volume of space that your ears are in space? And now, can you feel the space that your entire head occupies in space? Can you sense the volume of space that your entire head is in space? And now,
can you notice the volume of space that the column of your neck occupies in space? And can you sense the density of space that your entire neck is in space? And now, can you notice the space that your entire upper torso occupies in space? The density of space taken up by your chest, your ribs, your heart and lungs, all the way to your back and shoulder, blades to your shoulders. Can you sense the volume of space that your entire upper torso is in space? And now, can you become conscious of the space that your entire upper limbs occupy in space and the weight of space that your upper extremities are in space? Your shoulders, your arms to your elbows and forearms, the density of your wrist and hands. Can you notice the weight of space that your entire limbs are in space? And now, can you sense the volume of space that your entire lower torso occupies in space? Your abdomen, your flanks to your ribs, all the way to your lower spine and back. Can you sense the volume of space that your entire lower torso is in space? And now, can you feel the density of space that your entire lower extremities occupy in space? To your buttocks, to your groin, to your thighs, the density of space of your knees, the weight of your shins and your calves. Can you notice the volume of space that your ankles and feet, down to your toes, your entire lower limbs occupy in space? And now, can you notice the space that your entire body occupies in space? Can you sense the density of space that your entire body is in space? And now, can you sense the space around your body in space? And can you notice the volume of space that the space around your body takes up in space? And can you sense the space that space is in space? And now, can you sense the space that this entire room occupies in space? And can you sense the volume of space that this room takes up in all of space? And now, can you sense the space that all of space takes up in space and the volume of space that space is in space? Okay. So, Thank- unhone basically, this is a kind of, so thank you, Meetu, for reading so beautifully. This is all we'll be able to do today. Yeah. Thank you so much. Thank So it was a beautiful appendix A that talks about this is how you start meditating. जब हमने शक्ति गवेन की किताब पढ़ी थी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, उसमें भी हमको ऐसे ही समझाया था. हेड टू टो आप पूरा एक एक चीज को देखो, दैट हाउ डज योर हेयर लुक लाइक. तो उन्होंने बोला कि कितना स्पेस आपका हेयर ऑक्यूपाई कर रहा है. हम सबको पता है, लाइक आई हैव बिलो शोल्डर लेंथ हेयर, सो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. देन माय फोरहेड, माय आईज, माय ईयर्स, माय नोज, माय चीक्स, my chin, my lips, my neck. Okay, then my shoulders, my shoulder blades, then my arms. So एक body part को नीचे तक देखो. This is what Dr. Bishnoi also taught me. This is how he used to make me meditate. Head to toe एक चीज का वो नाम लेते थे और वो मेडिटेट वैसे करवाते थे. तो शुरुआत मेडिटेशन की हमेशा अवेयरनेस से होती थी. बी कॉन्शियस एंड बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, you know, and that is the biggest form of meditation. तो वो appendix A में जो उन्होंने समझाया है, that this is what you can do also. एक एक body part को, पेट है उसको देखो, मन की आंखें बंद है, with your eyes closed you have to see that. It's a very good form of meditation and you can see that it is relaxing. Then I had another colleague, his name was Rohit Mishra. He's not there in our company anymore. He's a very big yogi. मतलब बहुत अच्छा, वो हमारे योगा के कोर्सेज होते तो वो रन करता था वो, और मैं साथ में, मतलब मैं किताब लिखती थी, वो सिखाता था इस तरह से. सो इवन रोहित हम सबको लंच ब्रेक के पहले मेडिटेट कराता था, वो भी ऐसे ही कराता था, हेड टू टो. That so what he would say is that relax your hair, relax your eyes, relax your forehead, relax this. So he was using this word and relaxing, और whole body is relaxed. So वैसे डॉक्टर जो स्पेंसर ने अलग तरीके से समझाया हमको, तो उन्होंने वैसे बताया है that you just pay attention and be aware of your entire body part head to toe. So you're focusing your attention only on one thing, you know, मतलब
सिंगल माइंडेड अटेंशन होता है, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. योर बॉडी स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग एंड देयर आर इतने सारे बायोकेमिकल चेंजेस इस वाले प्रोसेस में ही होते हैं. और फिर वो वाटर राइजिंग इंडक्शन हमें बताएंगे, ये भी बहुत बढ़िया होता है. ये भी हम पहले सीख चुके हैं शक्ति गवेन की किताब में, कि पानी नीचे है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और एक दफा ऐसा आया है कि आप उसके अंदर पूरे सबमर्ज हो गए हो. तो वही वाला है कल वाला भी. सो दैट इज व्हाट वी, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन जो हमको सिखा रहे हैं. तो कभी कभी जब आपके पास टाइम कम होता है या आपका दिमाग बहुत चल रहा होता है, यू रियली नीड टू काम डाउन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन डू ऑल दिस. यू कैन जस्ट सिट एट वन प्लेस, आलती पालती मार के आप बैठो या चेयर पे बैठो, और फिर अपनी पूरी हेड टू टो, अपने ऊपर से लेके नीचे तक अपनी पूरी बॉडी पे फोकस करो. इट्स अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन. ओके, सो दैट इज ऑल वी हैव टुडे. मी तो आप कुछ बोल रहे थे. I mean, like, I thought that you were saying something and I... No. There was too much space in this. there was a lot of space, yeah. I noticed that because वो awareness को center करने की कोशिश कर रहे थे. So that's why he said that when you actually think that, you know, what, कौन से space में मेरे eyes हैं, what space is occupied by my forehead, so उसे attention centered हो जाती है. That is why he was using this word space again and again. So even I noticed that. But it's a beautiful way of centering ourselves. So yeah. So thank you so much. Thank you everyone, and thank you for all the love and support. And so see you soon. And I think कल परसों में हमारे ये खत्म हो जाएगा. Then we'll start a beautiful new book. And Neville Goddard का आप कोई videos पढ़ लेना, नहीं तो Feeling is the Secret करके उनकी किताबें हैं. So try and read Neville Goddard more and more and more. That will make it very easy for you to understand our next book that we will be reading. But that's by Dr. Joseph Murphy. And the book we'll be reading is by Dr. Joseph Murphy, but Dr. Joseph Murphy को Neville Goddard भी बहुत रेफर कर, मतलब Neville Goddard को रेफर बहुत करते थे वो. Okay, so इनके बहुत sync and they are aligned together. So anytime when you get... हाँ जी. No. So yeah, that is all we have, and thank you so much. And then we'll meet up tomorrow morning. Bye for now. And Thank you. Yeah. Thank you so much, ma'am. दीप्ति ये भारती ने भेज दिया है लॉ ऑफ अजम्पशन. लॉ ऑफ अजम्पशन. अच्छा, अब यही Yeah, बारी she has sent. नेविल गॉडार्ड की भेजी है क्या भारती? हाँ, yeah. Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है, perfect. You are so adorable always. Thank you Superb. Bharti, for doing that. Thank तो you बस so ठीक है, much, the work ma'am. becomes easy. So the work becomes easy. जब भी आप वॉक करने जा रहे हो तो सुन लीजिएगा. वो इंग्लिश में है, मुझे पता नहीं अगर वो हिंदी में है. भारती, एक बार आप चेक कर लेना अगर वो हिंदी में Ma'am, है. it's in Hindi summary sort of, so I'll send that as well. अच्छा, ठीक है. All right. Okay, bye. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.